Hi guys and welcome back to my YouTube channel. Like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches. Happy New Year, happy 2024 to every one of you. I hope you guys had the most amazing and beautiful 2023, and I am genuinely looking forward for the next year that is ahead of us, and I think we all are. 2023 was just amazing. It was beautiful, full of amazing lessons, full of blessings. There was happiness and abundance, and I genuinely couldn't be more grateful for 2023. And I hope and I wish that 2024 is bigger, better, and also merrier for all of us. Also, I just bought like a couple of things from Thailand, and I visited Bangkok, Krabi, and Phuket. And so I basically just shopped from Bangkok only. I really liked few things in Krabi and Phuket, but I couldn't get any time to sort of shop from there. But like, this is one advice: if you guys like anything, even on day one of your trip, just get it. Don't wait for the last day, because then you'll be short on money, short on time, and there won't be any energy too. So and moving forward, you guys know that there are very famous markets in Bangkok, and one of them is Chatuchak and second is Platinum Mall. I think Platinum Mall is just famous because of Instagram reels. Like, this is something that I feel personally. It's not like out there, or it's not just amazing, or like you won't be like surprised. Yes, the market is great, you find good stuff, good quality stuff, I would say, but they are very 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 expensive, and you can find literally the same items in Sarojini or even in your own city market at a little bit cheaper price too. And then you even have to carry all the saman way back to your home, so why carry that extra luggage when you can find the same thing in India too? So I controlled myself, and I did not bought like a lot of things, and sadly I didn't even get any souvenirs for anyone. I just got few things for myself, because I just realized that everything is so expensive over there, and it was not just worth it. Plus, I genuinely did not have a lot of money too. I just spent a lot of money on like food and experiences that I had there, so there was literally no money to shop at that point. So the place that I basically shopped was from Indra market. It's like a very sweet little market in Bangkok. It's pretty cheap also. And I also like bought a few things from Platinum Mall. Not a lot of things, but just a few things from Platinum Mall. And I just realized that the shopkeepers are also a little rude there. So I just feel that shopping from your local street shops in Thailand is very cheap. It's better, good quality too, plus you can bargain as much as you can. We also went to this really amazing mall also. I think it was Centra Mall, I'm not sure. It was really nice too, so bought a few things from there also. And let's just see what I all got. So the first shopping bag is this one, which says I love shopping. Honestly, I love the poly bags that they give you. So the first thing that I have for you guys is this amazing and super good quality airy bra. It's genuinely the most beautiful bra that I've ever seen. It's best for your everyday purpose and everyday use. You can see the coverage it will give you. It does not have any lining, as you can see, but still it has something that will give you that support. Plus, it was so cheap. It was just for 120 baht, which is nearly 250 rupees in INR, and it's just amazing. I love the shape that it has. It just makes you feel so good, and like good lingerie always makes you feel very strong, powerful, and I just love that. So always, I think you should always wear good quality lingerie also. Plus, this is so soft. It's genuinely very very soft. So I am so proud of this buy. Plus, I love the beige and like this color. It's just aesthetic, and it's so comfortable. So I got these shorts. They have half fried egg on it, and I think they're super cute. They were for again 100 baht, which is nearly 220 rupees. Not not something that we won't get this in India, but I think the design is so cute and it's so good quality. The cotton is so amazing, so breathable. Pretty big, I think, but when I wear it, I'll
fit into these. Yeah, I just don't, I don't know at this point because I've not really tried them. And also you cannot try anything there, like you just cannot try, you just have to see and buy. So that's also one thing that is not really something that I really enjoyed. Next are these super cool socks that I got for myself, and they are so warm and so good. Just this watermelon socks. You will get a bunch of socks like these, and they also have thoda sa say illusion of watermelon. It's 3D watermelon. So I really like this socks because when I saw this I was like I need to get this. We get these in Miniso also, but Miniso पे थोड़ा सा expensive है और ये मुझे जहाँ तक याद है under 50 baht ही था. It was not for 100 baht for sure. I remember now. The next pair of socks is this avocado socks. This is I think ankle length. This is pretty short, and these are also again so warm and so soft. I really like these socks too. Like when I saw these I was like I just need to get it. Plus you get such cool pair of socks there. If you have that loud personality, if you like those, you know, McDonald's, Skittles and all of these printed chupa chup socks, you can also get those. But my wife was not that loud, so I got myself these avocado ones, and these are so cute and again very warm and good quality. Next thing and the most famous thing there you will find is passport covers. You will literally find them in every market, and ये I think हमने जो सबसे सस्ता वाला जगह था वहाँ से कराया था, जहाँ पे I think ये 80 baht का था. 80 baht is 170-180 rupees. And I got myself a hot pink case. I wanted a beige or like a brown aesthetic, but my friend was like no, get something different, get something loud, because deep down I think I really like pink. I like enjoy pink stuff, so I was like let's get it. So it has this beautiful camera here, because you guys know how much I love the camera, and then it says Vanshika. So just very pretty and something very memorable that I'll always remember. I've not kept my passport inside this as of now, but I really enjoyed this purchase. And if you have the time and a lot of money, you can get these for your friends also. It's a good part of a good cute souvenir. So the next souvenir that I got for myself, which I think I'm never even going to even use, is this lighter. I think this is so cool. My friend was like, babe, you need to get this. Like she told me, किसी के लिए मत ले, अपने लिए ले ले, हमेशा तुझे याद रहेगा. And it's just so cool. And when you light it, it actually speaks something. Wait. Dude, this is so cool. And थोड़ा सा आपको pressure लगाना पड़ता है इसको जलाने के लिए, तो just keep it as a showpiece in my closet or like in my vanity, on my vanity. But it's so cool. It was for 100 baht, which is 200 or 220 rupees, I guess. Just convert it, yaar, convert खुद कर लेना. Next I have these two Thailand pouches. I think ये तो बहुत ऐसे mandatory सी चीज़ लगी थी मुझे कि यार ये तो मुझे कि मतलब ये तो मुझे लेके जाना ही जाना है, ये नहीं लेके जाऊंगी तो मेरा ट्रिप कैसे complete होगा types. And this is so pretty. It has, you know, cute elephants on it, and it says Thailand here. We have the famous Thailand elephants, and it's a zip pouch. इसमें आप practically काफ़ी चीज़ें भी store कर सकते हो. Oh wow, ये तो मैंने देखा ही नहीं. इसमें कुछ ये भी है. I don't know इसमें ये क्या है, but कुछ तो है ये. और ये क्या है ये मुझे नहीं पता. ये मैंने देखा नहीं था लेते वक्त. Very cute pouch. मे बी ये लोग ऐसी चीज़ें डालते हो जैसे हम लोग न्यूज़पेपर भरते हैं, ये लोग ये भर देते होंगे. बट आई रियली लाइक. एंड द नेक्स्ट पाउच इज दिस. इट्स प्रिटी फन एंड लाइक ब्लू कलर का है ये. इसमें काफ़ी सारे कलर्ड एलिफेंट्स हैं, एक ही नहीं है. एंड ये भी मुझे काफ़ी प्रिटी लगा था, तो मैंने सोचा चलो ये भी ले लेते हैं. एंड ये थे 100 बात में 3 थे, 250 रुपये के. हाँ, 220 रुपीज़ में 3 मिल रहे थे ये, तो हमने डिवाइड कर लिया था. आई वॉन्टेड 2 एंड माई फ्रेंड वॉन्टेड 1 ओनली, सो आई गिव 1 टू हर. एंड 2 मैं अपने पास ले आई. एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है. आई थिंक आई एम गोना गिव इट टू माई बेस्ट फ्रेंड इफ शी लाइक्स इट. सो pretty cute. So next is my favorite jhola. I got all this from Platinum Mall. ये एक स्टोर है Platinum Mall पे. I think ये हर किसी को पता होगा कि Instagram की वजह से. First up I have these beautiful scrunchies. मुझे लगा था कि यार scrunchies तो मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, ये इतनी सुंदर लगी ना मुझे. ये भी बेज कलर में है, इसमें पर्ल्स बने हुए हैं और ये छोटे छोटे से कुछ स्टारी सी चीज़ें हैं. 40 रुपये में यार इतनी सुंदर और इतनी गुड क्वालिटी स्क्रंची मिल रही है. वॉट एल्स यू कुड आस्क फॉर. सो आई वाज लाइक
ये तो पक्का ले लेते हैं. माई मॉम वुड ऑल्सो बी सो प्राउड ऑफ मी बिकॉज मैंने लिया है. वाओ. एंड नेक्स्ट इज दिस थोड़ा सा वाइट पर्ल में, एंड इस पे भी यही स्टारी सी चीजें हैं, बट ये थोड़ा सा अगेन सुपर प्रिटी एंड सुपर क्यूट. ये मैं कभी कभी कहीं बाहर जाऊंगी तो मैं लेके जा सकती हूँ. ऐसे हाथ पे डाली हुई भी काफी क्यूट लगेगी. सो इट्स वेरी प्रिटी. एंड थाईलैंड में मैंने एक चीज देखी थी, शॉपिंग जहाँ जा कहीं भी शॉपिंग करोगे यार, वहां पे बच्चों की चीजें इतनी ज्यादा मिलती है, इतनी ज्यादा मिलती है. इट्स लाइक प्रेग्नेंट वुमन, बच्चे, बूढ़े, स्पोर्टी चीजें, पार्टी करना है आपको, डेट पे जाना है, ऑफिस जाना है, हर मैराथन जाना है, आपको हर चीज मिल जाएगी वहां पे. लिटरली हर एक चीज मिल जाएगी. इट्स क्रेजी क्रेजी. मतलब मॉल जाके तो मेरा दिमाग ना खराब हो गया था. मुझे ना ऐसा लग रहा है मेरा बीपी लो हो रहा है बिकॉज it was too overwhelming at the mall. Like there was so much to look at, so much to just buy, and when you don't have enough money you just feel very irritated also कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं क्यों आ गई हूँ इधर. तो मतलब वही चीजें आपको बार बार ऐसे फील होती है. But it's okay, अब तो it's done and done. Pair of accessories that I have is this earrings का set. I think you can never have these dente earrings का enough set. मुझे ऐसा लगता है. इसमें basic भी हैं, पर्ल्स हैं, ये छोटे से गोल गोल भी हैं. ये पाइनएप्पल वाले तो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है. इसमें थोड़े से छोटू से डायमंड वाले भी थे, बट आई डोंट नो वो डायमंड वाले कहाँ चले गए. तो अ लिटिल बैक स्टोरी, जो मेरा एक राइनस्टोन वाला हेयर बैंड था जो मैंने शीन हॉल में दिखाया था, वो गुम हो चुका है. वो घर से ही गुम हो चुका है, हमें समझ नहीं आ रहा वो कहाँ है. तो उसका दुख मैंने और मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा ही मना लिया था. तो आई वाज लाइक जब मैं थाईलैंड जाऊंगी आई एम गोना गेट अ सिमिलर लुकिंग हेयर बैंड फॉर मी. और वहाँ इतने सारे हेयर बैंड्स थे, ओ माई गॉड, इट वॉज क्रेजी क्रेजी. बिकॉज ये सब चीजें अपने लिए ली है. वाओ, सेल्फ लव पीक चल रहा है आजकल मेरा, लाइक पीक. सो आई बॉट माई सेल्फ दिस ब्यूटिफुल ब्लैक हेयर बैंड. इट्स गिविंग मी ब्लेयर, एंड आई थिंक डीप डाउन हम सब लोग ही ब्लेयर ही हैं. इसमें इतनी ज्यादा सुंदर सुंदर डिटेलिंग हो रखी है. यू कैन सी ऐसे डायमंड्स हैं, बीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेलवेट है ये पूरा टेक्सचर, और वेलवेट के ऊपर ही सब कुछ बना हुआ है. इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. और इसको मुझे बहुत संभाल के रखना पड़ेगा. वैसे वो भी पता नहीं कहाँ है, बट जहाँ पे भी होगा आई थिंक मेरा हेयर बैंड ठीक होगा. सो प्रिटी गाइस, जस्ट लुक एट इट. नेक्स्ट पेयर ऑफ इयरिंग्स आर दीज राइन स्टोन इयरिंग्स. ये आई थिंक ऐसे स्टेटमेंट इयरिंग्स ना हमारे पास में होने ही चाहिए, बिकॉज आई जस्ट फील दैट कभी शूट्स वगैरह जो हम करते हैं अपने मेकअप वगैरह के, यू डोंट नो कभी भी आपको स्टाइलिंग के लिए अगर ये चाहिए हो तो दे कम इन वेरी हैंडी एंड दे लुक वेरी डैजल वेरी प्रिटी ऑल्सो. प्लस एक बहुत सस्ते थे यार, इससे सस्ते तो ये कहीं मिलते भी नहीं है, इवन मीशो वगैरह पे भी नहीं मिलते. सो आई वाज लाइक 40 रुपीज़ में ये चीज़ मिल रही है मुझे, विच इज़ beautiful. Next pair of earrings are these gold chunky hoops. I think मेरे तो earrings इतने पता नहीं कहाँ रह जाते हैं, टूट ही जाते हैं. तो मैंने सोचा कि चलो 20-40 रुपए में इतने सुंदर hoops मिल रहे हैं, इनका फ़ायदा उठाया जाए, उनको चुपचाप से बस लिया जाए. So I got myself these गुड क्वालिटी चंकी गोल्ड हूप्स. प्लस उनके स्टॉपर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. नेक्स्ट पेयर ऑफ हूप्स आर दीज थोड़े से ट्विस्टेड बैम्बू वाले गोल्ड हूप्स. ये सब के सब 20-20 बात के ही थे. तो मुझे था कि यार ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनको भी ले ही लेते हैं. बिकॉज आई लव हूप्स, आई लव ज्वेलरी इन जनरल, आई लव ज्वेलरी, एंड आई थिंक जितनी ले लो मेरे हिसाब से तो कम ही पड़ती है. अगर आपकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है देन कुडोज टू यू, बट मेरे जैसे लोगों की तो नहीं है. I really accept this, so I really like these hoops. And next pair of hoops are these chunky gold hoops, and ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा pretty लगे थे. ये मैं अपनी बहन को भी दे सकती हूँ, like I'll just make her choose whatever she wants, she can take it. And I also got like 2 hoops for my best friend also, because she also likes a lot of hoops, and I think we're all just obsessed with jewelry in general and especially hoops. एक और hoops. These are your famous Bottega hoops, and ये भी गोल्डन कलर के ही हैं. छोटू से हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा छोटू से हैं. सो आई वाज लाइक ठीक है ये भी ले ही लेते हैं, प्यारे लगेंगे. मैं हर चीज़ यही करती हूँ, ये भी ले ही लेते प्यारे लगेंगे, ये भी ले लेते प्यारे लगेंगे. मतलब क्या होगा गाइज, मेरा कुछ होगा मुझे नहीं पता लगता कभी कभी, बट अच्छा है, प्रिटी है, क्यूट है. नेक्स्ट इज दिस वेरी प्रिटी ब्रेसलेट दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ अगेन 20 बात में ही. एंड इस पे क्यूट ऐसे एलिफेंट्स वगैरह बने हुए हैं, और इस पे ये ब्लू है और स्काई ब्लू कलर के बीड्स है. सो आई वाज लाइक
let's get this. So I was like let's just get this क्योंकि ये काफ़ी वो चीज़ है, मेमोरेबल सी चीज़ है. अभी तो गाइज और भी इयरिंग्स आएंगे. आई थिंक इसके बाद एक लास्ट पेयर है मेरे पास दिखाने को. एंड दीज आर अगेन योर स्पायरल वाले हुप्स. और ये तो मैंने अभी पहन भी लिए थे. अभी मैं परसों किसी की पार्टी पे गई थी तो मैं ये वाले ही पहन के गई थी और ये काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रहे थे मेरे ऊपर. एंड द क्वालिटी सो नाइस, इट्स सो हैवी ऑल्सो. काफ़ी अच्छा पेयर निकल गया ये. मैंने इतना उससे उम्मीद नहीं किया था बट काफ़ी सही निकल गया. एंड आई रियली लाइक दीज हुप्स. मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है. मैंने ये CD क्रिस्टियन डियोर वाले ये लिए हैं छोटू से अपने लिए हुप्स. मुझे ये अच्छे लगे काफ़ी ज़्यादा और ऐसे क्लासी से लगे तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं. हाउ डज इट मैटर क्या है क्या नहीं है. एंड जस्ट गॉट इट फॉर माई सेल्फ एंड आई थिंक आई प्रीटी मच लाइक इट. ऐसे क्लियर भी नहीं है दैट इट्स CD बट इट्स प्रीटी गुड एंड आई रियली लाइक इट. फिर बारी आती है उसी सेम स्टोर से जो प्लैटिनम वाले से जहाँ से मैंने ये ज्वेलरी वगैरह सब लिया है. ये 2 क्लॉक क्लिप्स की. आई थिंक माई मॉम इज़ सो प्राउड ऑफ दिस चॉइस दैट आई मेड बिकॉज क्लॉक क्लिप्स तो चाहिए रहते हैं, जितने हों उतने कम हैं. और वहाँ पे इतने ज़्यादा तरह तरह के क्लॉक क्लिप्स मिलेंगे बट उसमें जो कुछ ऐसे डिज़ाइन थे जो मैंने इंडिया में भी देख रखे हैं ये भी मिल ही जाएंगे. बट मुझे था कि चलो 42 रुपीज़ तक में इट्स नॉट अ बैड बाय एट ऑल. सो आई गॉट दिस ग्रे बो वाला क्लॉक क्लिप. प्लस मुझे अच्छा लगता है क्लॉक क्लिप लगाना. ऐसे बालों को उल्टा कर लो और एक ही लगा लो बस. एंड देन आई हैव माई फेवरेट बेज कलर का क्लॉक क्लिप. ये काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी अच्छे से मैंने कल ही ट्राई किया था. बाल अच्छे से इससे होल्ड हो जाते हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस एंड आई क्वाइट लाइक इट. मुझे नेक्स्ट और जो कि बहुत ही ये तो लेना ही लेना होता है ना, इसको भी लिए बिना तो ट्रिप पूरा नहीं होगा. तो ये है फ्रिज मैग्नेट. इट सेज थाईलैंड. इट हैज़ योर फेमस थाईलैंड टुक टुक ऑन इट एंड इसमें पिंक टुक टुक है. इट्स वेरी क्यूट एंड लेट मी जस्ट ओपन दिस एंड फाइनली मैं इसको अपनी फ्रिज पे लगा ही दूंगी. एंड इट्स वेरी 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 क्यूट एंड प्रिटी. जस्ट लुक एट दिस. यार मुझे तो ना सब कुछ याद सा आ गया इसको देख के. वाओ. So the next item is that I got myself a pair of wedge heels. They were very 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 cheap. They were just for like 220 baht, which is nearly 450-460 rupees. And I was like let's just get this and they were looking so pretty on my feet also. And of course they're in black color. So without wasting any time let me just show you that. So there was this mall that we were at. It was near somewhere on I think somewhere near Platinum Mall only. There are a lot of malls in Bangkok. I will insert the exact name of that mall if I get it because I remember I was there to eat KFC. It was our last day and we just stumbled upon these small stalls in the mall itself. They were very cheap. They were selling things for like 100 baht, 200, 300 and 400. So we just came across the shoe wala space there and they had amazing pairs honestly. But the one that I really liked were these wedge heels for myself. Like, there are some times when we wear lehengas or saris or like pants in general that are very long. So you need a comfortable pair of heels. So I was like let's just get these because I will not wear them a lot. I'll just wear them sometimes. So there was no point in spending a lot of money. So I was like let's just get this. So these are the wedgies. I think according to me they look so pretty and super 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 classy also. I love the entire wedge I love the entire jute wala detailing here. They're just so gorgeous. I think I love these heels a lot. Plus they were looking so pretty on my feet also. So the next thing I got from my mom is this very pretty Coach wallet. It's just so stunning and so pretty. Plus this was very cheap also there. So got it on a very good price. And she just wanted a really nice a good wallet. So I was like let's just get this. And it comes in this dust bag which is again very pretty. And let me just show you the wallet. There were very different colors in this. They had the brown and pink one also, but I was just very intrigued in the green one. Plus I really love the Coach detailing here, the monogram. It's just so pretty and so classy. It looks like this from back, like piche se. And you have a lot of space also in this. So I think this was one of the best purchase that I made from Bangkok. And I really like this a lot.
the last thing that I have to show you guys is the most gorgeous, stunning, beautiful and amazing smelling perfume from Dolce & Gabbana. I got this from duty free and it's just so stunning. I always wanted this perfume. It was in my wish list since years. It has this Dolce & Gabbana print and it is all velvet, so it just feels super 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 luxurious and it just smells heavenly. It is their Pour Femme. I basically wanted Intense in this from Dolce & Gabbana, but Intense is I think discontinued and they don't really sell Intense at stores especially. So I was like, it's okay because this one also smells like Intense. So I was like, let's just get Pour Femme because it's 70% Intense and 30% Pour Femme. So I was like, let's just get this. And it also has this DNG detailing over here, all of this. It's not the fanciest bottle ever, but it's super classy and it smells heavenly. It's all maroon only from inside, and I remember even Intense had a perfume. The bottle is so classy. It's all transparent and clear glass, which I love, and it's a little dark maroon from this end and it says Dolce and Gabbana. Very simple, very minimal looking bottle that I really like. And guys, this smells so good, like so good, and the staying power of this perfume is nearly a day or like so. If you don't wash your clothes, you will still smell of this perfume, just how my sweatshirt still smells of this perfume, and it's been more than 2 days. And amazing is the word. It's basically a night perfume, but if you even use it in the daytime with a very like, you know, minimal or like very light smell, like with a light smelling mist, it would layer up so well and it will not give you a headache for sure, because this is something that I always looking for. Like, I don't want my perfumes to give me a headache, so this is something that I really love. It smells like a rich Arabic woman, but not with a headache, so minus the headache. And so happy and so proud of myself for actually being able to give all these things to me, and it's just beautiful and amazing. The next thing that I bought for myself is this t-shirt. It's a very big t-shirt in charcoal black. It says Nirvana. I think these t-shirts are really famous on H&M and Zara, and then it has a big smiley on it. So it's really nice. It's oversized plus very comfy and cool looking a t-shirt. It was for 110 baht, which is 230 rupees I guess, and pretty good and like decent. I think very cool. Also, you will find them in a lot of design options, and this was something that I was like, okay, let me just get at least one piece of clothing. So I got myself this. I really liked the sweater vest, and there were some pants and all also, but I was like, ये सब कुछ मिल ही जाता है इंडिया में, इतने प्राइस का तो मिल ही जाएगा. ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट नहीं लगा मुझे कि ओ ये तो बहुत चीज़ ही अलग है यार, ये तो लेनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे इतना वहाँ पे. But I really like this pretty comfy and like an oversized t-shirt that I can just wear when I'm not in the mood to like dress up and just want to like dress cash but still cool. So good. Next thing is very famous, these Thailand scarves. You can see they've written made in Thailand, and they were very famous. You will find these stalls almost everywhere. You will even find these stalls even at the hotels and you know everywhere that you go, because कहीं ना कहीं मिल ही जाता है. प्लस इसका प्राइस भी अलग अलग है. कहीं ये 80 का मिलेगा. 80 इज द मिनिमम दैट यू विल गेट, बट ये 100 तक जाता है, एंड 100 इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गेट. 80 वाले का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा उसमें आते हैं, प्रिंट्स में आते हैं. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, 100 बात इज 220 रुपीज़, एंड विच इज़ नॉट 200 रुपये में 250 रुपये में आपको असली कश्मीरी स्कार्फ नहीं मिल सकता है, कश्मीरी सिल्क, ऑब्वियसली नॉट. बट मैंने बस ये ले लिया एज अ सुवेनियर टू जस्ट गिव इट टू माई मॉम एंड लाइक अ मेमोरी. कभी कभी यूज़ कर लेंगे किसी छोटे मोटे फंक्शन पे. बट आई विल शो यू गाइस. मुझे तो ये अच्छा लगा, प्रीटी गुड. और ये स्कार्फ भी ना आप बहुत लोगों के लिए लेकर आ सकते हो, क्योंकि अगर आपको किसी को गिफ्ट वगैरह करना है तो लोग काफ़ी ले रहे थे ये वाले स्कार्फ्स, मैंने देखा था. तो इसका प्रिंट ना कुछ ऐसा है, ऐसे गोल्डन सा है, दिख नहीं रहा है कैमरे पे, बट इट्स रियली प्रिटी. इट्स थोड़ा सा ग्रे एंड लाइक गोल्डन, एंड इफ आई टेक इट लाइक दिस, ओह इट्स गिविंग मी अमिताभ बच्चन वाइब्स.
from राजनीति में थे ना अमिताभ बच्चन, हाँ I guess. So it's really pretty and cool. कोई भी winters में सूट वूट के साथ डाल सकते हो. When हम राजस्थान अगर शादी पे जाएंगे अभी फेब में, तो I can also like wear it with my लहंगा and it's pretty good and like pretty cozy. वाओ, इससे ना मुझे थाईलैंड की खुशबू याद आ रही है, वो हवा याद आ रही है. Oh my god guys, it's crazy when you come from a trip. It takes you so much time to just, you know, be back in the normal zone that you are at, and it's not easy. It's not at all easy. Sorry. Thank you for watching, and I hope you guys enjoyed this video, because I really enjoyed shooting this video for you guys. And it's always fun being on YouTube because you can just be yourself, you can just have fun, and it's just amazing. And I think you will now see more of the Thailand vlogs now, so stay tuned for that, because first I'm going to upload this video, the shopping video, and then we shall start with the vlogs. So take care, have an amazing 2024. If you have any content suggestions, video suggestions, you can always drop down in the comment box, and I'll see you guys next time very soon. And till then, take care and bye.